we were talking about. Again, definitely yes. That was also a single server queuing waiting line model. Queuing model or waiting line model. Okay. Wherein an inter-arrival time was indicated, service time was also indicated, and basically what we do is we take average values. Okay, but it is not always that that service time and the enter arrival time would be the same. So that's a mathematical modeling which actually when we take average value, it's a mathematical modeling which helps us in terms of getting some idea, okay, a rough estimate. uh, when we want to plan for a wider horizon, that means when we want to plan out for different eventualities and what all things can happen. Okay, so for that we normally go for simulation, and there that inter-arrival time, okay, and service time can also be different. So the first one which we had taken there, we had an average inter-arrival time which was given to us. Okay, it was a fixed inter-arrival time, fixed service time, and we were required to simulate the system for the first 10 minutes. Okay, when we started simulating it, we realized that the inter-arrival time was only just 1.4 minutes, whereas the service time was 3 minutes. So we were able to service only 4 customers in 10 minutes. And that too, the servicing of the fourth customer was not complete. Okay. And the waiting time was increasing all the time. Okay. So we started with the first customer as 0, then it went down to 1.6, 3.2, 4.8, 6.4. So it is multiplying. Okay. So when you have inter-arrival time which is much less as compared to a service time, obviously there would be a big queue. Okay, and never-ending queue is actually getting formed here. So we just wanted to see how actually simulations are done. So it is nothing but a way to model the system and check its response for different kinds of inputs. After that, the second question which we started off with was a company which is manufacturing 200 mopeds. Okay, this is what we will be covering up today. That day we started, but we couldn't complete it. Okay, so we'll be doing it now. So a company is manufacturing around 200 mopeds. When we say around, that means it's not sure that it will always be 200. So because of some or the other reasons, there could be, we will be able to manufacture more also at times, and we will be able to manufacture less also. So either it could be because of some defective raw materials coming in between, so because of which my total raw material availability may reduce, so I may not be able to produce that much, or there may be some difficulty in the production line, so possibly that I may lose some time, and hence I may not be able to complete it. Okay, so what has been observed is the production per day. Okay, the probability for production per day ranging from 196 to 204 has been recorded, and the probability for the same is indicated as 5%, 9%, 12%, 14, 20, 15, 11, 8, and 6%. So if you look at the sum total of it, it should come out to be as 1. That means 100%. Fine. So this information is available. The finished mopeds are transported in a specially designed 3-storage lorry that can accommodate only 200 mopeds. I believe you guys would have seen that kind of lorries normally moving
across the national highways, which are very big lorries. I don't know whether you have seen this one. I'll just try and see if I can show you. Have you seen this kind of covered trucks? This kind of? यहाँ पर, which we normally see here on the roads. Something of this kind, but much bigger, slightly bigger than this. They are somewhat like this, but they are covered completely. Indian photographs बहुत कम है. Is the screen visible? Somewhat this kind, but this one is for cars. Okay, for automobiles it's slightly different, and it is completely covered. Even for cars also it is covered here in India. Okay, so they are loaded, and these are automated, these ones, so you can even put them up. You can slide this. These are motorized, so you can take them down as well as you can pull them up also. So completely automated kind of. So they are used for transporting vehicles across. So what is happening is they are actually talking about a truck of similar size, which has a capacity of 200 mopeds. Mopeds are smaller ones, so which has a capacity of around 200 mopeds to be transported from one place to another. Now, the company is able to manufacture 196 to 204 mopeds per day. Okay, and every day at the end of the day, all whatever that has been manufactured will be shipped out. The finished mopeds are transported in a specially designed lorry that can accommodate only 200 mopeds using the following 15 random numbers, that is from 82 to 10. Okay. Simulate the mopeds waiting in the factory. So we are supposed to find out what will be the average number of mopeds waiting in the factory and what will be the number of empty spaces in the lorry. So first thing that we should be doing is वो पहले random numbers हम लोगों को लगेंगे. So I am just trying to put it here in the form of a text. वो ऑटोमेटिकली उसने उसको ब्रेक भी कर दिया. ट्राई करके देखिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आपका टेक्स्ट कुछ इस तरह से आएगा. And if it comes something like this, so you can break it using
inbuilt function. Sorry, using the inbuilt function given in the in this tab, which is converting text to columns. Okay, just indicate that there is a delimiter. You can see that comma is getting repeated every time. So just indicate that it's a delimited text. Tab name, comma is the delimiter. Okay, then just click on next. This will show you, this will give you a preview, so you can just drag across and see and just say finish. It will break it all across. Now what we are going to do is, we are going to simulate for different days with this simulate random numbers. Now what we are will be converting these probabilities into some numbers which will be indicator of it. As we have already talked earlier, it would be only just a simulation. That means this is how it looks, but it may not be. Okay, so 196, for 196 there is a probability 5. Okay, so when we say probability 5 means 5 numbers can be used for representing it. Now which 5 numbers to be used? What we can do is we can range them. We can indicate that these 5 numbers will be used as a indicator. So what we can do is 0 to 100, because the total probability is 100. So we are going to use, since we are starting from 0, so we'll go up to 99. Okay, so 0 to 99 numbers will be used. That means 100 numbers will be used to simulate. And these 100 numbers will be broken up based on the probability. So that means 5% means 5 numbers को हम अलग कर देंगे. 9% means 9 number को हम अलग कर देंगे. 12% means 12 numbers would be separated, and so on. So what we are doing is we are starting with starting random number as 0. Okay, and since the probability is 5, so since I'm starting with 0, I will take only up to 4. So 0, 1, 2, 3, 4. These are 5 numbers. Are we okay up to this? So can you repeat what you said? Based on the probability, we are going to break the numbers so that those numbers will represent that probability. So अगर मैं इसको 5% probability बोल रहा है, so that means if I ask you a question that what is the probability that I will be getting a number from 0 to 4, okay, from uh, uh, from a set of 0 to 99 numbers. Okay, so what is the probability that I can get a number which is pulled out is belonging to 0, 1, 2, 3, or 4. So obviously, since these are 5 occurrences out of 100 occurrences, so it would be 5 upon 100. So your probability is 5%. Clear? Yes, sir. So what we'll be doing is we'll be breaking the numbers, okay, depending upon the probability. और वो उस range के हिसाब से हम उसको बनाते चले जाएंगे. So for 5% probability, we'll start from 0 and we'll end at 4. 5, 9, 12, 14, वो सारे के सारे मैंने इधर पर लिख लिए. 5, 9, 12, 14, 20, 15, 11, 8 and 6. Okay. उसके बाद में मैंने उनके लिए स्टार्टिंग रैंडम नंबर और एंडिंग रैंडम नंबर लिखना शुरू किया. सिंस आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 0, सो एक कम रहेगा. सो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप इसको इधर पर इक्वल्स टू 5 - 1 कर देंगे तो आपको 4 बराबर आ जाएगा. यहाँ तक ओके? Since I am starting from 0,
So 5 तक जाना है तो 5 minus 1 will be 4. Next set will start from the next number. So equals to, हम ये वाला लेंगे plus 1. So it will start from 5. The next one will depend upon 9. So मतलब सर 5 क्या किया आपने? हाँ 5 क्या किया अभी आपने? 5 मैंने ये इसको +1 कर दिया तो मुझे 5 आ गया. And 0 you took it as it is. हाँ 0 मैंने खुद से लिया. That was the starting number. ठीक है. मैंने उसके पहले इधर पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी भी ले लेते हैं. अभी इस वक्त आपके पास में एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ इतना ही है. ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन दिया हुआ है जो इधर पर दे रखा है. ठीक है. So what we'll do is we'll find out cumulative probability. तो cumulative probability will be this. First के लिए तो वो same रहेगा. Second में this plus your 9. So 5 plus 9 would be 14. फिर 14 plus 12 will be 26. उसके बाद में 26 plus 14 would be 40. 40 plus 20 would be 60. 60 plus 15 would be 75. 75 plus 11 would be 86. 86 plus 8 would be 94. And 94 plus 6 would be 100. So आपका ये बराबर 100 तक आ रहा है. Right? अब हम इस साइड का भी कंप्लीट करते हैं. अब ये जो मेरा नेक्स्ट जो है वो 14 तक जाना है. ओके. बेसिकली ये जो एंडिंग रैंडम नंबर रहेगा, it will depend upon your cumulative probability -1. So instead of this, make it cumulative probability -1. So it would be easy for you to work around. ठीक है. So दूसरा वाला आपका आ जाएगा 5 से लेकर के 13 तक. इसके बाद वाला कहाँ से शुरू होगा? 13 plus 1 14. 14 से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये? 26 minus 1. 26 minus 1. तो 25. नेक्स्ट वाला आपका शुरू होगा 26 से and it will go up to 39. Next will start at 40 and will end at 59. 59. हाँ, यहाँ पर this will start from 60 and will end till 74. 74. Very good. यहाँ पर से it will start from 75 and will end till 85. 85. So अभी मैंने क्योंकि इधर पर फार्मूला डाल दिया हूं तो इट इज इजी फॉर मी टू जस्ट ड्रैग. ओके. नहीं तो आप मैनुअली कर सकते हो. फाइन. दिस इज कॉल्ड एज अ रैंडम नंबर टेबल और इसको हम लोग यूज करेंगे आगे सिमुलेशन के लिए. सो दैट मीन्स इफ आई एम गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 0 and 4, 0 से लेकर के 4 तक के सभी नंबर्स विल रिप्रेजेंट 196 एज अ प्रोडक्शन. इफ आई एम गोइंग टू जनरेट एनी रैंडम नंबर and the random number comes between 5 and 13, that means it will indicate 197 as my production. If it is from 14 to 25, it will indicate 198 as my production. And accordingly, since उतने numbers हैं तो उतना ही आपके chances भी रहेंगे for it to get generated. यहाँ तक okay? Yes sir. Yes, sir. तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो हमने रैंडम नंबर्स हमको इधर पर ऑलरेडी दिए हुए थे तो हम इसको जस्ट कॉपी करके यहाँ पर रैंडम नंबर्स के इसमें मैं इसको ट्रांसपोज करके पेस्ट कर लेता हूँ. अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट रिमूव इट. या आप चाहो तो मैनुअली कर लीजिएगा. whatever that you are comfortable. ओके. आप चाहो तो एक मैनुअली लिख सकते हो. 82, 89, 78, 24, 53, 61, 18 and so on. This is my day 1, day 2. So we'll be doing the simulation
फॉर 15 days और 15 days के लिए 15 रैंडम नंबर्स हमको दिए हुए हैं. आई होप आप लोग भी साथ में कर रहे हैं. Yes, sir. Okay. So random number 82 will indicate how much production? 82 falls between 75 and 85. So that Yes, means sir. it will indicate 202. Two. This value will be 202. Fine. Yes, sir. दूसरा 89 कहाँ पर आएगा? Sir, 89 आएगा, 86 and 93, 203. 203. So that means it would be 203. So what about 78? 202. 202. What about 24? 198. Sir, 198. Very good. What about 53? 53 will be 200. 200. 200. What about 61? 201. 201. अभी ये सब चीज ना हम लोगों को मैनुअली करना पड़ रहा है, करेक्ट? So Excel has a feature which can be used. What feature can be used? सर if यूज कर सकते हैं. हम लोग if वगैरह यूज कर सकते हैं, बट इतने सारे नंबर्स हैं, if करते करते हमारी बैंड बच जाएगी. सर VLOOKUP यूज कर सकते हैं. Perfect. Very good. Who said that? सर Vidima? यस सर. Ah, very good. So we can use VLOOKUP. So if we use VLOOKUP, okay, look up this random number in this table, freeze it, okay, because when I'm going to drag the formula, so my table should not change. So I will just freeze it, comma, you will freeze it by using button F4, okay, comma. Now we have to indicate from which column the value is to be picked. So this is first column, second, third, fourth, and this is the fifth column. So value is to be picked from fifth column, comma. Now I will not use exact match, because if I use an exact match, तो वो क्या करेगा? वो फिर exactly उसी नंबर को सर्च करेगा और वो exact नंबर मिलेगा नहीं. So एक काम करते हैं, हम exact match लिख करके देखते हैं पहले, and then we'll change it. Okay, and I say enter. So see, it is giving me hash and a false. So let me. Sir, approximate लेना पड़ेगा. हाँ, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा, बट अप्रोक्सीमेट के लिए एक और कंडीशन रहती है कि दिस नंबर शुड बी इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, दैट मींस सबसे लोअर नंबर सबसे ऊपर और फिर बढ़ता चला जाएगा. सो वो क्या करेगा? इट विल लुक फॉर 82 एंड इट विल स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम हियर. 75 आया, नेक्स्ट इज 86. सो इट विल टेक दिस नंबर एज अ रेफरेंस और इस 75 के हिसाब से वो इधर पर देखेगा और फिफ्थ कॉलम से वैल्यू उठा करके मुझे दे देगा. ओके, सो इसके लिए आपको ना ये थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है कि इंटरनली वो कैसे कर रहा है, वो फंक्शन काम कैसे करता है. ओके, सो वो मुझे ये वैल्यू दे देगा और जैसे ही 85 तक के लिए भी इट विल गिव मी सेम वैल्यू. सो मैं अगर इधर पर 85 भी डालता हूँ, सी इट इज 202 ओनली, बट द मिनट आई मेक इट 86, इट मेक्स इट 203. सॉरी, ये नंबर क्या था? 82 था ना? यस 82. Sir, 82 था. Okay, so अगर if you are using formulas, you can do things much faster. Okay, मैनुअली भी कर सकते हो, बट मैनुअली करने में it will take a while. इस तरह से मेरे सारे के सारे पर डे प्रोडक्शन का ये आ जाएगा. Fine. Now, since we are starting, we don't know about our opening inventory, so we'll assume it to be 0. Okay, and when I'm
dispatching it. I have produced 202 mopeds. Lorry comes, it has a capacity of 200 mopeds only. So I will dispatch how many mopeds? 200. 200. 200. So my closing inventory would be how much? 2. Perfect. For next day, what would be my opening inventory? 2. That means the closing inventory of the previous day. Perfect. Now here, since I am producing 203 mopeds, I will be dispatching how much? How many mopeds? 200. 200, because that is the capacity. Correct. What Can would you be my repeat? closing inventory now? 3, I guess. So 5. 5. 4, 5. 5. दो Two मेरे पास plus- में ऑलरेडी इन्वेंट्री में है, इधर पर से 200 मैंने भेज दिए, 3 इधर पर से आ गए. सो नाउ इट वुड बी 2 + 3, so it would be 5. At both the instances, was there any empty space in the lorry? No, sir. No. So no empty space. Here, was there any empty space? No. No, sir. So there was no empty space in the lorry, but we have a closing inventory. What will happen is my closing inventory will become opening inventory for the next day, and I am producing 202. So again, I will be dispatching 200, whereas my closing inventory will become 7. 7. So is there any empty space in the lorry? No. No. No empty space. What about here? 198 are produced. So how much can I dispatch? 198. 200. I will be able to dispatch 200, 198 which I have produced plus 2 from my inventory. Yeah, right. Correct? So 200 मैं dispatch कर दूंगा. My opening inventory would be 7, but my closing inventory would be 5. 5. so it will be 5. Is there any empty space in the lorry? No. So आप इसको मैनुअली पूरा एक एक करते हुए जा सकते हो. अभी आगे हम देखेंगे, there are some problems which we will see. Okay, we'll do it manually. बाद में मैं आपको फॉर्मूला भी सेट करके करेंगे. Fine. So now here again, next day my opening inventory would be 5. 200 I have produced, 200 I will dispatch. So my closing inventory will again be 5 only. There will not be any empty space. Fine. What about this one? Next day, my opening inventory would be the closing inventory of the previous day. अभी 201 मैं बना रहा हूँ. How many mopeds will I dispatch? 200. 200. What about my closing inventory? 6. It will Six. become 5 plus 5 1. plus 1. Very good. For the next day, my opening inventory would be 6. I am producing 198 mopeds. How much will I dispatch? 200. 200. And what would be my closing inventory now? 4. It will be 4. Are there any empty spaces at both the instances? No. ये भी आपको हर एक लाइन को एक एक करके करते जाना है. My opening inventory would be 4. What about how much do I produce? 200. How much will I dispatch? 200. 200 only. So my opening and closing will both will remain as 4, and there is no empty space in the lorry. अब यहाँ पर देखिए. My opening inventory is 4. I have produced only 196. So I can dispatch 200, which is 196 plus 4, which is there in my inventory. My closing inventory will become 0. Okay. Empty space in the lorry is nil. That means there is no empty space. पूरा 200 का कैपेसिटी था, पूरा हमने फिल भरा है. तो Now, 0 कैसे हुआ? आपके पास में 196 बनाए थे आपने. आपके पास में ओपनिंग इन्वेंटरी 4 का था, दोनों मिलाकर के आपने 200 लॉरी भेज दी, तो आपके पास में बचा कुछ भी नहीं ना. Yes, sir. हाँ, बराबर.
बराबर। So अब इसके बाद में next day is a challenge. My opening inventory, I don't have anything there, correct? So it's 0. I have produced 198 mopeds. Now how much will I be able to dispatch? 198. I'll be able to dispatch only 198 because I don't have anything in the inventory. What would be my closing inventory? 0. 0. What about my this? 2. 2. So empty space in the lorry would be 2. My opening inventory next day will be again 0. I have produced 200. So how much will I be able to dispatch? 200. 200. I will be able to dispatch 200 only. So 200. What would be my closing inventory? 0. 0. 0. Are there any empty space in the lorry? No. No. What would be my opening inventory for the next day? 0. 0. What about my dispatch, next day's dispatch? 200. 200. What would be my closing inventory? 2 2. It would be 2. and Is there empty any space empty 0. space in the lorry? 0. 0. 0. Next day अभी क्या होगा? 200. 200. 200 is what I will be able to dispatch, though I have produced 199 because I have an opening inventory of 2. तो उसमें से एक मैं दे दूंगा. So मेरे पास में closing inventory में I will be left out with 1. 1. Is there an empty space? No. No. What about here? 200. So आप आपके पास में इन्वेंट्री में ऑलरेडी एक है, 200 आपने बनाए, 200 आपने भेज दिए. So closing inventory would be 1. There is no empty space in the lorry. Next day मेरा opening inventory is 1 and I produce 197. 198. My dispatch would be 198. Very good. What about closing inventory? 0. 0. Sorry? Please come up again. Somebody was asking something. No, sir. No, sir. ठीक है. So अब यहाँ पर empty space in the lorry कितना होगा? 2. क्योंकि मैंने 198 डिस्पैच किए हैं, करेक्ट. अब ये सब चीज हम लोग मैनुअली कर सकते थे, मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिकली कर सकते थे. व्हाट आई वुड से इज लॉरी कैपेसिटी मैं यहाँ पर फिक्स करके डाल देता हूँ, ठीक है, एंड इट इज 200 यूनिट्स. अब मैं ये सब चीजों को ऑटोमेटिकली करूंगा, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूलाज. माय डिस्पैच, फर्स्ट डे का डिस्पैच कितना होगा? जो फुल अमाउंट है हम वो कर सकते हैं, या फिर हम ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर 0 लिखते हैं और आई विल चेक इफ सम ऑफ if sum of my production, okay, and opening inventory is greater than or equal to the lorry capacity, उसको मैं फिक्स कर दूंगा क्योंकि हर बार उसी से मेरे को कंपेयर करना है, कॉमा, if it is greater than or equal to this capacity, then the value that
should be dispatched should be equal to this. Else, the value to be dispatched should be equal to sum of my production plus प्लस नहीं आएगा, कॉमा माय ओपनिंग इन्वेंट्री. तो यहाँ पर वो मुझे दिखाने का, मैं ऐसे करके सेलेक्ट कर रहा हूँ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड आई से एंटर. वो अपने आप से क्लोज कर देगा. तो उसने देखिए अपने आप ही 200 ले लिया. करेक्ट. माय क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू sum of how much I produce and my opening inventory minus how much I have dispatched. Empty space in the lorry will be equal to this fixed value, okay, F4 minus my mopeds that I'm going to dispatch. Next day, my opening inventory will be equal to this. अब मेरा mopeds dispatched, इसके लिए मैं बकायदा सीधा ये formulas क्योंकि ऑलरेडी डाल रखा है, मैं उसको जस्ट ड्रैग कर लूंगा. क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए मेरा ऊपर का फॉर्मूला मैंने डुप्लीकेट किया, यहाँ पर भी ऊपर का फॉर्मूला डुप्लीकेट किया, और अब इसको जस्ट सेलेक्ट करके आई जस्ट पुल इट ऑल अक्रॉस. Formula is nothing but logic, converting it into a logic. Okay. So आप चाहो तो मैन्युअली कर सकते हो. Again, like of every column. Yes. फॉर्मूला देखना है आपको. Yes, sir. I hope all the Thank you. formulas are visible. जिसको एक्सेल से ना जमे वो मैनुअली कर सकता है. ओके. My job is to give you both. You choose what you are more comfortable with. बट आपने देखा कि मैनुअली करने में टाइम ज्यादा लगता है, और अगर आपने उसको सक्सेसफुली बराबर से फॉर्मूला की तरह डेवलप कर लिया तो फटाफट हो जाता है. सिर्फ पहले 2 लाइन के लिए आपको लॉजिक लगाना, बाकी सब फटाफट हो जाएगा. क्लियर. Done? Yes, sir. अब इसमें ये जो रैंडम नंबर्स हमको दिए हुए थे, अगर रैंडम नंबर्स ना दिए हों, so we can use a function called as rand between. Okay, we can indicate the lower bottom value, comma, the higher up value 0 to 99, and I say enter. It will keep on generating a new number every time. अगर मैं कोई दूसरा सेल एडिट भी करता हूं तो वो अपने आप देखिए नंबर चेंज करता है. Can you see? So this is another method which you can use for generating your random numbers in case if there are no random numbers indicated. Fine.
Are we comfortable? And Yes, we take sir. it to next one. इसके लिए ये वाला टेबल एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से चेक करना शुरू करता है, तो इसके लिए हम लोगों ने रैंडम नंबर्स को इस तरफ लिखा है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था कि आपका ये जो टेबल होता है इट इज लाइक दिस। जो हम टेबल जो बनाते हैं मैनुअली जब कर रहे होते हैं, सो वी मेक दैट टेबल समथिंग लाइक दिस। ओके, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। सो एंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ये आप इसको ऐड करोगे, फिर दिस प्लस दिस वैल्यू। सिंस ये सब कुछ इस तरह से दिया हुआ है तो आप क्या करोगे उसको कि आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू अभी ये डेसिमल्स में है ना, तो आप उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए या तो आप पहले ही इसको इनटू 100 कर दीजिए, तो आपका वो 5 हो जाएगा। एंड दिस नंबर अगेन 25 into 100, so ये भी आपका फिर उसी हिसाब से बराबर होता चला जाता है। एंड जस्ट ड्रैग इट। सो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आप पहले निकालोगे नंबर्स के हिसाब से करके। Then the next thing is your random number range. So it will be, मैं पहले ही वो टेक्स्ट का ये डाल रहा हूँ, सो आप इसको फिर लिखते हो 0 to 4। फिर नेक्स्ट इसमें आप लिखोगे 5 to जो क्यूमुलेटिव जो है उससे एक कम 13। फिर नेक्स्ट में आप लिखोगे 14 to 25। यहाँ पर you will write it as just a second, it would be 26 to कितना तक आएगा 39, 39। यहाँ पर 42 कितना तक 59, वेरी गुड। सो ये आप मैनुअली जब करते हो तब आप इस तरह से करोगे, बट अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप ऊपर वाला टेबल यूज करना, बिकॉज उसको आप वी लुकअप के लिए भी काम में ला सकते हो। स्टार्टिंग एंडिंग आप इस तरह से लिख करके सब कुछ फटाफट फॉर्मूला डाल करके आप उसको ड्रैग करके आपका काम काफी क्विकली कर सकोगे। फाइन, आर वी ओके अप टू दिस? yes sir. किसी को कहीं कुछ डाउट? No, sir. चलो, डाउट्स नहीं है तो ये समझने का मैंने बहुत अच्छा काम किया। Sir, एक काम, sir, can you show the formula of each column again? कौन सा वाला? Sir, नीचे वाला, not above. It's done. ये वाला टेबल का? Yes, yes. इसमें मैंने कोई अच्छा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने किया ना, फर्स्ट के लिए मैंने इनटू 100 किया था क्योंकि प्रोबेबिलिटी से मैं उसको फिजिकल नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और सेकंड के लिए मैंने थोड़ा सा अलग किया, ऊपर का नंबर ऐड किया प्लस दिस इनटू 100।
Got it. ठीक है, आप लॉजिक पे फोकस करो, बाकी ये तो मतलब आप अपने आप से भी फॉर्मूलाज अपने हिसाब से भी डेवलप कर सकते हो. If somebody is not comfortable with, they can go for if then else statement, but then if then else statement would be very complicated और उसमें मिस्टेक्स के चांसेस उतना ही बढ़ जाएंगे. उसकी जगह पर मैनुअली कर देना. ठीक है, दो चार लेवल तक if then else statement is fine, but when it goes beyond, it is preferable not to use if then else statement, क्योंकि आपको इसमें नेस्टेड इफ्स के लिए जाना पड़ेगा. Let us look at the next one. Now here we have two variables. इसके पहले वाले में क्या था, एक ही वेरिएबल था. वेरिएबल क्या था? That was your production was your variable. हम किस दिन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हमको पता नहीं, वो रैंडम नंबर्स के ऊपर से डिफाइन होगा. बट ये क्वेश्चन नंबर 3 में you have got two variables. One is arrivals, second is service time. So arrivals भी फिक्स नहीं है, हमको पहले जैसे एवरेज वैल्यू दी जाती थी ना उस तरह से नहीं दिया है. डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड टू अस इन द फॉर्म ऑफ एक मतलब 100 ऑब्जर्वेशंस किए, 100 ऑब्जर्वेशंस में से इतने बार एंटर अराइवल टाइम इतना था, इतने बार इतना था एंड सो ऑन. सो एक तरह से देखा जाए तो व्हाट यू हैव बीन गिवन इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके, सो यहाँ पर जो आपके पास में अवेलेबल है इज अ फ्रीक्वेंसी टेबल. क्लियर अप टू दिस? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जस्ट अ सेकंड. हमारे यहाँ पर ना कुछ लोगों के पास में बहुत पैसा है, तो वो लोग हमेशा सिर्फ काम ही करवाते रहते हैं. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस. Are you still hearing any background noise? No, sir, not now, No, but sir. earlier. Earlier it was there, ना? Yes, yes. सॉरी फॉर दैट. तो है ना, इधर काफी पागल लोग रहते हैं. एक कोई आइडिया का वीपी है, एक बंदा है उसके बाजू वाला, वो उसका खुद का 3 मर्चेंट शिप्स है. फिर एक है वो प्रोफेशनल कुरियर का ओनर है, उसके 2 ओनर्स है ना, उसमें से एक इधर रहता है हमारे रो एंड में. बहुत तो बड़े लोग हैं ऐसे सर. काफी काफी पागल है और पैसे की कमी नहीं है, तो रोज इधर काम ही हो रहा होता है, चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. पीपल आर क्रेजी. और मालूम सबसे ज्यादा रूल्स फ्लॉन्ट करने वाले यही इडियट्स होते हैं. एनीवे, फॉरगेट इट. I feel really bad for the disturbance because I don't want it to be there. चलो, ये वाला भी हम सॉल्व करेंगे. Should we try? Any idea how you would like to go for this? कुछ सोच रहे हो? कुछ सोचा है कैसे करोगे?
ऑलवेज सबसे पहला काम कन्वर्ट द टेबल्स इनटू इक्विवेलेंट रैंडम नंबर्स। सो पहला तो आपका रैंडम नंबर टेबल्स बना लो, दोनों भी इसके लिए। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, इजी है ना, इसको ही सीधा कॉपी करके हम नीचे डाल देंगे। So since we already have frequency, एक बार जस्ट देख लीजिए कितना तक है, टोटल 100 है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं होता 100 तो हम क्या करते थे, इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल, हमको 100 मिल जाता था एंड वी वुड हैव कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज और प्रोबेबिलिटी। So this divided by your total value, so that becomes, इसको हम फ्रीज कर देंगे, तो 2/100 will be 2% probability and so on। या फिर आप इसको ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट कर दो, क्योंकि बार में पहले मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करूं फिर नंबर्स में कन्वर्ट करूं, उसकी जगह पर मैं सिंस सम टोटल इज 100 तो मैं डायरेक्ट इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ले लेता हूं एंड दैट टाइम आई विल जस्ट ऐड। सो इक्वल्स टू 2 प्लस दिस 6 कम्स टू बी 8 एंड बाकी का सब ड्रैग कर लेना है, तो यू विल बी एबल टू गेट till 100। So this is perfectly fine, so I don't need to कुछ दिखाओ आप, C18 दिखाओ। अच्छा, you directly took is equal to C18। yes। Fine। यहाँ तक ओके? Yes, sir. ओके, सो मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गया है। नाउ कैन आई डिफाइन माय स्टार्टिंग रैंडम नंबर? पहला वाला obviously has to be from 0 and ending random number would be how much? 2 minus 1. Cumulative frequency minus 1। Very good, perfect, -1। very nice। नेक्स्ट इसका it would be पहला जहां पर एंड हुआ +1, तो मतलब 2 से शुरू होगा एंड एंडिंग विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका जहां एंड हो रहा है -1, करेक्ट। अब ये मैंने इधर पर फॉर्मूला सेट कर दिया कि दिस एंडिंग ऑफ द प्रीवियस वन +1, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला सेट कर दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी -1। अब सिर्फ मुझे इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है। परफेक्ट। अगर आप एक्सेल फॉर्मूलाज को यूज करोगे तो बहुत सारी जगह पर ना आपका मेहनत बच जाता है। Have you been able to do it? Yes, sir. सर स्टार्टिंग रैंडम में क्या किया आपने? स्टार्टिंग रैंडम नंबर में पहले वाले में तो मैंने 0 लिखा खुद से ही, ठीक है। दूसरे वाले में मैंने लिखा ऊपर का नंबर एंडिंग रैंडम नंबर, ऊपर का +1। एंडिंग का तो सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस वो किया ना सर, वो समझा, E18 एंडिंग के लिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी -1 माइनस, या ठीक है।
फाइन। ठीक इसी तरह से अभी मुझे दूसरे का भी रैंडम नंबर्स का पूरा बनाना है। अभी इसका फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मैं सेट कर रखा हूँ, करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको ही सीधा कॉपी करके, नहीं यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखता हूँ यहाँ पर। और दूसरे वाले इसका जो डेटा है ना, सो वो चेंज कर दूंगा। बाकी आगे का डिलीट कर दो। ये वाला भी पूरा रेडी हो गया। किया आप लोगों ने? Yes, sir. Done. Okay. अब चीज क्या होता है, एक्सेल आपका वी लुकअप जो भी देखिएगा वो स्टार्टिंग रैंडम नंबर को देखने वाला है, और वो इस साइड पे उसके राइट हैंड साइड में देखता है नंबर्स। तो ये टाइम बिटवीन अराइवल्स जो है वो हमको नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो लेफ्ट हैंड साइड में है। सो हम इक्वल्स टू करके बस ये वैल्यूज को उस तरफ ले लेते हैं, सो दैट वी आर एबल टू यूज वी लुकअप, ताकि हमारा टाइम उतना बच जाए। नहीं तो मैनुअली करना पड़ेगा, मैनुअली करेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। इक्वल्स टू, ठीक, इधर भी वैसे ही। फाइन, आई होप एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल। अब हम अपना एक्चुअल सिमुलेशन टेबल पर जाते हैं। ये पहला वाला आपका ये रैंडम नंबर टेबल किस चीज का है? एक्चुअली दिस इज फॉर इंटर अराइवल टाइम। दो लोग आने के बीच में कितना टाइम है। नेक्स्ट वन इज रैंडम नंबर टेबल फॉर सर्विस टाइम। नाउ व्हाट विल डू इज, अपने को कितना सिमुलेट करने को बोला है? Queuing system, the arrival and service patterns for service station are as indicated in the table below. Work out the simulated pattern for service to help design the service facility. यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला कितना करना है। हाँ सॉरी, दिया है, रैंडम नंबर दिया है, अराइवल के लिए भी दिया है, सर्विस टाइम के लिए भी दिया है। हमेशा आपको इस तरह से नहीं दिया होगा, कभी कभी क्या होता है आपको इवन इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है। ब्रैकेट ओपन 78, 54, एक सेकेंड, यहीं पर लिखूंगा तो आपको इजीली समझ, वो हम लोग इसमें ना देयर इज अ फीचर कॉल्ड एज ऑटोफिल, तो हम उसको यूज कर सकेंगे। 78, 54, दूसरा 78, 26। अब मैं इधर पर ऑटोफिल करके भी उसको कर सकता हूँ। मैं इसको टाइप कर रहा था तब शायद आया भी था।
अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। देखिए अगर वैसे होता है नहीं तो इस तरह से भी आपको सेट ऑफ डेटा दिया हो सकता है, ठीक है। तो 78 विल करस्पॉन्ड टू अराइवल टाइम, 54 विल करस्पॉन्ड टू सर्विस टाइम। सो आपको इस तरह से भी दिया हुआ हो सकता है। फाइन, अब हम क्या करेंगे, लेट अस सिमुलेट फॉर कपल ऑफ डेज, सिमुलेटेड सिस्टम। तो हम मान लो फर्स्ट डे या फर्स्ट पेशेंट बोलते हैं या कस्टमर 1। इसको ऐसे ही ड्रैग कर लेंगे, वो अपने आप ही आगे कुछ के लिए बना लेगा। So this becomes my, actually मैं I want customer। फिर उसके बाद वाला नेक्स्ट क्या रहेगा, इंटर अराइवल टाइम, मतलब दोनों के बीच में कितना इंटर अराइवल टाइम कितना रह रहा है। बट इंटर अराइवल टाइम डिपेंड्स अपॉन रैंडम नंबर, तो हमको रैंडम नंबर लेना है। तो पहले इंटर अराइवल टाइम रैंडम नंबर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वुड बी सो हम इंटर अराइवल टाइम का रैंडम नंबर सब ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यूज है। नाइन्टी फाइव तक का है, सो दैट मीन्स 10 कस्टमर्स के ही लिए हम बात कर रहे हैं, आगे का नहीं चाहिए। फाइन, सो नाउ माय इंटर अराइवल टाइम अकॉर्डिंगली विल वर्क इट आउट। फिर आपका सर्विस टाइम रैंडम नंबर, सर्विस टाइम रैंडम नंबर के बाद में सर्विस टाइम, ठीक। इसमें और भी कुछ निकालने को बोला है क्या, सिमुलेटेड पैटर्न, द अराइवल एंड सर्विस पैटर्न, बस उतना दिया हुआ है। मतलब आपको एक तरह से देखना है कि एक्चुअली क्या होगा। तो वी व्हाट वी कैन डू इज वी कैन आल्सो फाइंड आउट आवर सर्वर आइडल टाइम एंड कस्टमर वेटिंग टाइम, ठीक है। और एक एक करके विल वर्क इट आउट। पहले हम इसका भी ले लेते हैं, सर्विस टाइम का भी रैंडम नंबर ले लेंगे। अब मेरा इंटर अराइवल टाइम विल डिपेंड अपॉन दिस। सो अगर 78 है तो ऊपर वाले टेबल में अगर मैं देखता हूँ तो 78 कहाँ पर आएगा, ये मेरा स्टार्टिंग रैंडम नंबर हो गया, एंडिंग नंबर हो गया। 78 इज बिटवीन 77 एंड 86, सो दैट मींस इंटर अराइवल टाइम वुड बी 3.5, करेक्ट, परफेक्ट ना। सर वन क्वेश्चन, यस, तो ऊपर रैंडम के नंबर कैसे आया, कैन यू शो अगेन वंस? वो रैंडम नंबर ऑलरेडी दिया हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। ओके सर। क्वेश्चन में ऑलरेडी रैंडम नंबर दिया हुआ है, ओके। जो you told na that formula of random that we have to use when there is like नो in the रैंडम question they नंबर have not गिवन, given, right? हाँ, ठीक है। इसमें आप बहुत कुछ एक्चुअली कर सकते हो। हम लोग जो फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन और जो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस वगैरह, वो सब कुछ आप इसमें करके देख सकते हो।
ओके, तो जैसे अगर मैं मान लो फ्लिपिंग ऑफ अ कॉइन करना है, ओके, सो 0 से 100 तक का जो भी नंबर है, we can, since flipping of a coin, you have got only just two probabilities. That means either you will get a head or you will get a tail. So मतलब 0 से लेके 49 तक के numbers will represent head and 0 से लेके नहीं सॉरी 50 से लेकर के 99 तक के numbers will represent tails. तो जो भी नंबर आया उस हिसाब से हेड और टेल आप वो वर्कआउट कर सकते हो. जस्ट एक अगर करना है तो यू कैन सी. ओके, सॉरी अपना ब्रेक का भी टाइम हो गया. व्हाट डू वी डू? शैल वी फिनिश दिस एंड देन टेक अ ब्रेक? ये वाला खत्म करें? Yes, sir. फॉर्मूलाज वगैरह डाल करके आई विल बी एबल टू डू इट विद इन नो टाइम. ओके, सो माय हियर इट वुड बी वी लुक अप. ओके, दिस वैल्यू एक्चुअली 78 आपका इधर पर आ रहा था. स्टार्टिंग नंबर 77 और 86 इसके बीच में. दैट मींस इंटर अराइवल टाइम वुड बी 3.5. सो वी लुक अप this value in this range. इसको फ्रीज कर दीजिए. आपका स्टार्टिंग रैंडम नंबर वाला ये आ गया, कॉमा थर्ड कॉलम नंबर तो 3 and it has to be approximate match, so true and enter. So here the inter arrival time would be 3.5. आप इसको हर एक के लिए ड्रैग कर लो तो हर एक का इंटर अराइवल टाइम मिल जाएगा. सो आपका ये आ गया. अब इसमें इंटर अराइवल टाइम अगर आपका ये है, हाँ, सर्विस टाइम हम बाद में लेते हैं. सो पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि इसको जस्ट मैं ड्रैग कर लेता हूँ. आई विल हैव अराइवल टाइम. सो अब मैं अगर ये मान रहा हूँ कि मेरा सिस्टम चालू तो बराबर t इक्वल्स टू 0 पे हो गया, ओके, बट इंटर अराइवल टाइम वाज 3.5. सो माय कस्टमर would have come at time t equals to 3.5. so तब तक में मेरा सर्वर वाज आइडल, करेक्ट. so 3.5 minutes मेरा सर्वर वाज आइडल. was there any customer waiting time? जैसे ही आया, since my server was free, customer was taken in. अब इसका सर्विस टाइम कितना लगेगा? सो सर्विस टाइम 54 रैंडम नंबर है. 54 रैंडम नंबर हम वापस से वी लुकअप करके यूज करेंगे. सो विल लुक एट दिस टेबल. सो स्टार्टिंग रैंडम नंबर से लेकर के एंड तक का हम इसको लेंगे. सो 3 कॉलम्स, फ्रीज इट F4 से, एंड थर्ड कॉलम इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट बिकॉज योर वो टाइम वो इधर पर बताता है. ओके, सो it would be 3 comma and it has to be approximate match and enter. So आपको इस तरह से सभी का सर्विस टाइम भी आ जाएगा. मैंने एक गड़बड़ किया था, ये सर्विस टाइम है. फाइन. सो आपको सर्विस टाइम भी मिल गया. सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, इधर पर ना हम 2 कॉलम और डाल सकते हैं, विच इज सर्विस स्टार्ट एंड सर्विस एंड टाइम. ओके, सो सिस्टम आपका जरूर उस वक्त चालू हुआ होगा, बट जब कस्टमर आया, फर्स्ट कस्टमर के लिए सेम टाइम आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट. एंड सर्विस एंड टाइम विल डिपेंड अपॉन हिज स्टार्ट टाइम प्लस द सर्विसिंग टाइम. यहां तक ओके? हेलो.
Yes, sir. ओके, सो कस्टमर वेटिंग टाइम तो इधर पर कुछ भी नहीं रहेगा। सेकंड वाले का अभी जब हम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला एक्चुअली सेट हो जाएगा। अब इससे हमको क्लियर हो गया कि हमको इधर पर टेबल्स क्या क्या होने चाहिए, तो वो सब हमारा सेट हो गया है। फाइन। नेक्स्ट अराइवल टाइम क्या रहेगा? ये इंटर अराइवल टाइम प्लस पहला वाला कब आया था, करेक्ट ना? Yes, sir. 7. तो पहला वाला 3.5 पर आया, दूसरा वाला 3.5 सेकंड या मिनट जो भी है उसके बाद में आएगा, करेक्ट? सो आपका इंटर अराइवल का तो फॉर्मूला सेट हो गया, उसमें वी नीड नॉट वरी अबाउट। सो 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 9 प्लस 4.5 13.5 एंड सो ऑन। तो ये सारा आपका बराबर से अपने आप आ गया। व्हाट अबाउट माय सर्विस स्टार्ट टाइम? सर्विस स्टार्ट टाइम विल डिपेंड अपॉन पहले वाले का सर्विस कब खत्म हुआ और दूसरा वाला कब आया। तो यहाँ पर ये बंदा का सर्विस 5 और जो नेक्स्ट कस्टमर आया ही 7 पे, तो ये इसका सर्विस स्टार्ट टाइम क्या होगा? 7 पर स्टार्ट होगा, करेक्ट? So that means it would be maximum of either this value or his arrival time. So automatically वो 7 ले लेगा। End time would be service start time plus the servicing time. ठीक है? Is your server idle? So that will come to know from the time when it has started processing the current one minus the time when it has completed the processing of the previous one. So server was idle for 2 minutes. What about customers waiting time? Customers waiting time will be nothing but difference between when the service has started minus when he has arrived. Correct? So 7 पे आया, 7 पे ही उसका सर्विसिंग चालू हो गया, so he need not worry, immediately उसका सर्विस हो गया था। Now all that we need to do is just select, drag, and simulation is done for all the 10 customers. नहीं तो आप मैनुअली एक एक कर रहे होते थे। 8 8 फिर सर्विस एंड टाइम 9 फिर 9.5 9 पर आया बट 9.5 तक उसको वेट करना पड़ा, सो उसका वेटिंग टाइम इज 0.5, करेक्ट? यहाँ पर सर्वर वाज नॉट आइडल क्योंकि 9.5 पर एंड हुआ, 9.5 पर चालू हो गया, सो देयर वाज नो आइडल टाइम फॉर द सर्वर। बट व्हाट अबाउट हियर? इट एंडेड एट 11, started at 13.5, so again there was a waiting time of 2.5. So यहाँ पर मेरे लिए क्रूशियल क्या रहेगा? What is the total waiting time, total idle time, and how much is the average waiting time of the customer? So यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 2 ही कस्टमर को वेट करना पड़ा। अगर मैं पूरा का पूरा सबका एक साथ में एवरेज लूंगा तो इट वुड बी वेरी लेस, ओके? बट अगर मैं सिर्फ ऐसे ही बोलूं तो maximum average waiting time is 0.5. Are we fine up to this? आई होप आपको समझा होगा कि एक्सेल का फॉर्मूलाज का पावर बहुत जबरदस्त है। आपको सिर्फ पहले 2 आइटरेशंस के लिए फॉर्मूला सेट करना है और एक बार फॉर्मूला सेट हो गया तो पूरा ड्रैग कर लो, हाँ, एक्सट्रापोलेट कर लो। और दूसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आप रैंडमली फिर उसके बाद में बीच बीच में एक दो ऐसे चेक कर लीजिए जिस तरह से मैंने किए। फाइन। हेलो, आर वी ओके विद दैट? Yes, sir. So we'll take a break. It's 10:25, so 15 minutes, and we'll join again. Okay. So 10:35, 10:40, 41, 26 हो गया, 41, 10:41, ठीक है? Okay, sir.
Please don't log out. If anybody has any doubts, they can ask me. I'm there only. Sir, can you just show the formula of this table? All the formulas? Yes, sure. यहाँ पर VLOOKUP और बाकी इस तरह से. Yes, sir. Thank you. थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. हाँ. Is it visible all across? Yes, sir. Okay. Don't worry about the formula. Go with the logic. Okay? आप सब लोग डेवलप कर सकते हो ऑटोमेटिकली ऑन योर ओन. Done? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Anything else? इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट मैनुअली में काफी टाइम लग जाता है. काफी मतलब थोड़ा टाइम लगता है. एग्जाम में अगर आएगा तो 10 मार्क का मतलब 10 आइटरेशंस के लिए समझ के चलना है आपको. Any other doubts? Okay, let's catch up at 10:41.
Hello, sir. Hello. Yes. Yes, sir. Actually, I had a doubt. ये question 3 में ना in the PDF the random number table is not given. शायद मिस हो गया होगा बेटा. अच्छा तो it will be मतलब consider हम लोग यही कर रहे हैं कि given है ना? हाँ हाँ हाँ. Okay, okay. Yes, okay. ठीक है. अगर आपको नहीं दिया होगा ना कभी अगर मान लो मिस हो गया हाँ, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को वो तरीका बताया Yes. कि यू कैन जनरेट. correct. नाउ व्हाट विल हैपन इज अगर आपको रैंडम नंबर टेबल दिया है ओके तो आप ये मान के चलिए कि आप सब लोगों का आंसर सेम आएगा. Okay. अगर रैंडम नंबर टेबल नहीं दिया है तो आप किसी के साथ कोई भी आंसर कंपेयर नहीं कर सकते हो क्योंकि सबके रैंडम नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं. Yes, correct. तो वही एक थोड़ा सा चैलेंज रहेगा बट बाकी तो फाइन. ठीक है. Yes, sir.
Sir, Yes. like Can we the start? break is over. Sorry? Like the break time is over. Yeah. Can we start? Yes, sir. Sure. Shall we take up the next one? Yes, sir. In this one again, this is a two variable thing, and again the methodology to be followed would be very much similar. So inventory management से related है ये. The materials manager of a firm wishes to determine the expected demand of a particular item in stock and the reorder point.
This information is needed to determine how far in advance to reorder before the stock level is reduced to zero. However, both the lead time in days and demand per day for the item are random variables described by the probability distribution given below. So your lead time has been provided. Maximum lead time is up to 3 days, and the probability of lead times have been provided as for one day as a lead time 50%, 2 day 30%, and 3 day it is 20%. Now the demand per day is for 1, 2, 3, and 4 units, and the probability for them is 10%, 30%, 40, and 0.2. Right? So assuming replenishment level equals to 4, that means हम बोल रहे हैं कि मान करके चलते हैं replenish level जब हमारे पास में 4 जब भी ये होगा तो 4 यूनिट्स हम हर बार रिप्लेनिश कराएंगे तो 4 यूनिट्स करवाएंगे, ठीक है? या तो अभी दिस इज एन assumption which is provided, okay, कि just a second. जब भी आपका 4 यूनिट्स या उसके नीचे जाएगा सब तब हम उसको ऑर्डर करेंगे, और हर बार जब भी ऑर्डर करेंगे तो 4 यूनिट्स हमको मिलेंगे, ठीक है? सो हम उतना मान के चल रहे हैं. मैनुअली सिमुलेट द प्रॉब्लम फॉर 30 ऑर्डर्स. सो आपको इसको फॉर्मूला बेस्ड करना पड़ेगा. वी विल ओनली जस्ट डू फॉर 3-4 आइटरेशंस एंड देन यू कैन टेक इट ओवर. आप उस हिसाब से अपने हिसाब से फॉर्मूला सेट कीजिएगा और कर सकते हैं. फाइन. सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? Random number generation. और वेरिएबल्स. आपके वेरिएबल एक तो लीड टाइम है, दूसरा डिमांड पर डे है, ठीक है? सो पहला लीड टाइम का इसको ही आप चाहिए तो यहाँ पर डाल दो. अब इसमें नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट थिंग वुड बी, मैं इसको चाहिए तो बकायदा नंबर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है? सो परसेंटेज वाइज अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलूं तो इक्वल्स टू दिस into 100. So 50, 30, 20 ऐसे हो जाएगा. Now my cumulative probability will be equal to ये 50. Next इसमें this plus this one. Correct? यहाँ तक okay? Hello? Hello? Yes, sir. Yes. यहाँ तक okay? Fine है? अब हम start random number and end random number. Fine. Start random number पहला इसका क्या रहेगा? 0. End of कितना रहेगा? 50 minus 1, 49. Perfect. 50 minus 1, 40. Next का start random number क्या होगा? 50. 50. Yes. So that means this plus 1. End random number? 79. 29. Next random number का start? 80. 50. And then 99. since मैंने ये already बना लिया हूँ,
तो हम चाहिए तो इसके लिए भी ले लेते हैं। अभी इसमें ना, क्योंकि हमको VLOOKUP अगर यूज करना है तो ये लीड डेज को इधर पर लेना पड़ेगा, बट अगर नहीं करना है, मैनुअली करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको स्टार्टिंग और एंडिंग रैंडम नंबर्स मिल गए, उस हिसाब से कर सकते हैं। सो चाहो तो लेकर के रख सकते हो, सो दैट इट इज एट वन प्लेस। ओके, तो आपको बस सिर्फ इतने को ही ध्यान देना होगा। फाइन। और डिमांड पर डे इसके लिए करते हैं। तो आ गया डिमांड पर डे, और इतने इसको हम कॉपी करके अगर इधर पर डाल देंगे तो आपका इसका भी रेडी हो जाता है। देखिए, अभी मुझे बस सिर्फ जस्ट इधर से इधर तक का सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है, मेरा सब पूरा फुल रेडी होगा। परफेक्ट ना? है? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? Simulated system generation. सिमुलेशन टेबल और सिमुलेटेड सिस्टम। अब इसमें हम क्या क्या चीज लेना चाहेंगे? days, so day 1, day 2, day 3 and so on. कितने टाइम के लिए सिमुलेट करने को बोला है? 30। तो मतलब हमको टिल 30 तक जाना पड़ेगा। डेज के बाद में क्या चाहिए होगा? रैंडम नंबर फॉर डिमांड, उसके हिसाब से सिमुलेटेड डिमांड, करेक्ट ना? राइट। ओपनिंग इन्वेंटरी, क्लोजिंग इन्वेंटरी, ऑर्डर प्लेस्ड और नॉट, यस और नो। अगर आपका वो क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर मान लो 4 से कम है तो ऑर्डर प्लेस करना है, करेक्ट ना? Then what would be your take time random number?
लीड टाइम उस हिसाब से आपका मटेरियल उतने दिन बाद में आएगा। Okay? हम यहाँ पर क्वांटिटी ऑर्डर हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी हम कितना रख रहे हैं, we're going to keep it free. ठीक है, let us start from the first one. यहाँ पर हमको कुछ भी रैंडम नंबर नहीं दिया है, so हम एक काम कर सकते हैं, we can generate some random numbers and put them there. Fine. So मैं यहाँ पर sorry random number between 0 to 99 generate कर रहा हूँ and I will be generating it for all the 30 items. इसको तो ये बार बार चेंज होता रहेगा, इसके लिए इसको कॉपी करके वापस उसी पर पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसको पेस्ट एज नंबर्स कर दूंगा so that it doesn't changes again and again. ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग के 2-4 नंबर्स यही सेम रखिए, बाद में चाहिए तो आप चेंज कर दीजिएगा so that we all are on the same page. Fine. Are we okay up to this? Yes, sir. इसमें अभी ये जो टेबल हमने बनाया है ना, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर क्वेश्चन में इसी तरह का होगा। आपका डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्या क्या चीजें आपको कैप्चर करना है, उस हिसाब से आप उतना इंफॉर्मेशन उसमें डेवलप करोगे, उतने ही कॉलम्स आप डालोगे। ठीक, सो माय सिमुलेटेड डिमांड विल बी इक्वल टू VLOOKUP दिस वैल्यू एंड दैट VLOOKUP इज टू बी डन। मेरा डिमांड वाला कौन सा है, ये वाला। सो स्टार्टिंग रैंडम नंबर से लेकर के ये लास्ट के 3 फ्रीज कर दीजिए उसको, कॉमा कॉलम नंबर 3 कॉमा एंड इट हैज टू बी अप्रोक्सीमेट मैच, से ट्रू और वी विल पुट इट एज 1 एंड से एंटर। सो फॉर ऑल द सिमुलेटेड डिमांड्स अपने पास में आ गया। हम पहले से ही मान के चलते हैं कि अवर ओपनिंग इन्वेंट्री वुड बी 4। यहाँ पर हम 0 नहीं मान रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि मुझे पता है 4 तक का तो आएगा डिमांड, तो हम 4 यूनिट्स पहले से ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, सो एन assumption that I am starting with an opening inventory of 4 units. So मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस द डिमांड, करेक्ट? So it would be opening inventory minus the simulated demand. So एक यूनिट है, if it is less than 4 units, so अपने को ऑर्डर प्लेस करना चाहिए क्या? Yes. तो हम चाहें तो यहाँ पर if कंडीशन डाल सकते हैं, if this value is less than sorry हम is less than 4, then order is to be placed, else no. करेक्ट ना? Yes, sir. ऐसे ही लीड टाइम के लिए भी हमको रैंडम नंबर्स जनरेट करने पड़ेंगे। रैंडम नंबर बिटवीन 0 से लेकर के 99 तक के, तो 0,99 हम पूरा 30 तक के लेते तो कर लेते हैं। और उसको ही कॉपी करके वापस उसी पर पेस्ट कर देंगे एंड विल कन्वर्ट इट इनटू
values. Lead time 33 बोल रहा है. So that means वापस से VLOOKUP करके हम देख लेते हैं लीड टाइम कितना रहेगा. So 33 हम यहाँ पर देखिए आपका लीड टाइम का ये रहा. So starting random number से लेकर के एंड तक का पूरा लेंगे. You'll freeze it, comma. Column index number would be 3 and approximate match. Enter. 33 का मतलब हो गया कि हम पहले इसकी बात कर रहे हैं. That means the number would be in the first range itself. So that means my lead time would be 1 day. So 1 day मतलब मैं आज का आज order place करूंगा. Next day I will have an replenishment. So since it is 1 day, तो मेरा replenishment क्या होगा? Equal to this one plus 4 units. Correct ना? Fine. Sir, but only if it is 1 day it will be applicable, no? हाँ, only if it is 1 day, then only it would be applicable. अभी क्वांटिटी ऑर्डर अगर मान लो क्वांटिटी के लिए भी अलग से मेरे पास वेरिएबल होता है तो मैं ये भी लेता था. अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है फिक्स है कि क्वांटिटी जो मैं हर बार ऑर्डर कर रहा हूँ would be 4. करेक्ट. सो अब मेरा डिमांड इज फॉर 4 यूनिट. सो माय क्लोजिंग इन्वेंटरी वुड बी 5 minus 4. Correct, na? So my closing would be 1 units. Am I going to place an order? Since Yes. it is less than 4. Yes. Lead time is 14. So मेरा lead time random number is 14. So वापस से मैं VLOOKUP करूंगा तो उस हिसाब से मुझे कितना दिन का मिलेगा. 14 comes in the first range itself. So 1. Correct. 1 आया तो आपका फिर यहाँ पर वापस से ऐड हो जाएगा. तो मैंने ऊपर वाले में फॉर्मूला डाला था तो मैं डायरेक्ट से इधर डाल सकता हूँ. सो इक्वल्स टू दिस 1 plus 4 units. सो 5 हो गया. यहाँ पर अभी आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या रहेगा? डिमांड इज फॉर 3. 2. It would be 2 units. Should I be placing an order? Yes. Yes. Now since it is 76, what would be my lead time? 76 means 50 और 79 के बीच में. मतलब my lead time would be 2 days. अब क्या होगा? Will I have next day delivery? नहीं मिलेगा. करेक्ट. सो मेरे पास में कितना यूनिट्स रहेगा? 2 ही यूनिट रहेगा. डिमांड कितने का आया? 3 यूनिट्स का. सो मेरे पास में जो 2 यूनिट्स है वो बेच दूंगा. करेक्ट. एंड माय क्लोजिंग इन्वेंटरी विल बिकम 0. मैंने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है. सो अभी ये कंडीशन हमको इधर पर डिफाइन नहीं है कि ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किया है तो फिर से ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं करना है. सो normally since I have already placed an order, so I will wait. And if I am waiting, okay, so I will not place an order on this time and I'll wait. या फिर I can place an order also. अगर मेरे को formula based बकायदा पूरा करना है तो I can just place an order. और इसके लिए lead time 13 तो मतलब 1 day में आएगा. तो next day मेरे पास में इसका 4 units जो इधर पर ऑर्डर प्लेस किया हुआ था इसका 4 यूनिट्स प्लस इसका 4 यूनिट्स. सो आई विल हैव एन ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ 8 यूनिट्स. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू विल सिमुलेट एंड यू विल चेक योर सिस्टम. आर वी फाइन? Yes, sir. सो कितना वेल डिफाइंड मतलब क्वेश्चन है उस हिसाब से हम करते हैं. और कई बार ये सब चीजों को हम लोग यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि उनको कितना यूनिट्स रखना चाहिए. लीड टाइम
मुझे जो सप्लायर बोल रहा है कि 3 days तक का लीड टाइम हो सकता है, सो एम आई ओके विथ 3 days लीड टाइम? अगर मेरा ऑर्डरिंग क्वांटिटी हर बार का कम है तो 3 days लीड टाइम विल नॉट बी वायबल फॉर मी, है ना? मुझे कम लीड टाइम होना चाहिए। परफेक्ट। So this is how you actually take your policy decisions. आप पहले इसको पूरा वर्कआउट करके देखते हो कि भाई सिमुलेट करके कि यार इस तरह से में हम कितने बार ऐसा होता है कि we will land up in a situation wherein we don't have any inventory and there is an order which comes. There is a demand. So majority of the times you cannot turn down the demand. Are we okay? Any doubts? Sir, can you please repeat how we get the value 8? See what has happened here is मैंने पहले का ऑर्डर प्लेस किया था जिसका लीड टाइम वाज 2 days. सो नेक्स्ट डे तो उसका डिलीवरी मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है? और नेक्स्ट डे मेरा इन्वेंटरी पूरा का पूरा जीरो हो गया, उल्टा 1 यूनिट का लॉस्ट डिमांड आल्सो, है ना? देयर वाज वन कस्टमर whom I was not able to fulfill his demand. So actually I am losing an order also. So मैं क्या कर रहा हूँ, since my closing inventory is less than 4, so I will place in one more order क्योंकि यार उस पहले वाले का अभी तक आया नहीं है, एक और ऑर्डर प्लेस कर दो ताकि मेरे पास में एक्स्ट्रा इन्वेंटरी आ जाएगा। सो नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग इज मेरे को ये जो उसके पहले वाले दिन का ऑर्डर प्लेस किया था वो मुझे यहाँ पर 4 यूनिट्स मिलेगा और इसका लीड टाइम वाज 1 day, सो मुझे इसका भी 4 यूनिट्स मिला, तो मतलब 4 यूनिट्स प्लस 4 यूनिट्स आई हैव गॉट इट फॉर टोटल 8 यूनिट्स। ठीक है? ऐसे Yes. सब इसमें फॉर्मूला सेट करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो कुछ कुछ आपको ऐसे मैनुअली करने पड़ेंगे, या फिर ये अगर थोड़ा सा वर्कआउट करके आपने फॉर्मूला अच्छे से सेट कर दिया है तो यू कैन जस्ट सिमुलेट दिस आल्सो फ्लॉलेसली। क्लियर? डन? ये आप मैनुअली कर सकते हो आगे का नेक्स्ट आइटरेशंस धीरे धीरे। यहाँ पर अब मेरा क्लोजिंग इन्वेंटरी, सिंस डिमांड वाज ओनली जस्ट फॉर 1 यूनिट, my closing inventory would be 7. Since it is more than 4, I am not going to place an order. Sorry. And if I don't place an order, so यहाँ पर कुछ भी लीड टाइम वगैरह वैलिड नहीं रहेगा। Next, coming to the next one, so my opening inventory would be 7, or demand is for 4 units, so my closing would be 3, and now I will be placing an order. When I place an order, so depending upon this, it would be lead time of 2 days. So next day, मेरा opening inventory would be 3, and demand is for 1 unit, कोई बात नहीं, बच गए, so 2 units. I will be placing an order again, और इस बार जो है 1 day का लीड टाइम है, तो यहाँ पर I will be getting इधर का ऑर्डर प्लस इधर का ऑर्डर, so I will be getting an inventory of 8. Clear? Sir, 8 plus 2 also, na? Closing inventory. 8 plus 2, हाँ, perfect. So it would be 10. ठीक है? अब हमने यहाँ पर कस्टमर्स लॉस्ट और ऑर्डर्स अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स, अगर हम वो भी ट्रैक कर रहे होते और उसका भी कॉस्ट होता तो हमको फिर मालूम पड़ता था कि हमारा लॉसेस भी क्या है। ठीक? अभी क्लियर? एनी डाउट्स? हेलो?
Hello. No doubt, sir. Look at the second one. Next, question number 5. It is about single queue multi-channel system. जहाँ पर कि a coffee house is in a busy market operates counter service. The proprietor of the coffee house has approached you with the problem of determining the number of bearers he should employ at the counter. He wants that the average waiting time of the customer should not exceed 2 minutes. After recording the data for a number of days, the following frequency distribution of inter-arrival time of customers and the service time at the counter are established. Simulate the system for 10 arrivals of various alternative numbers of bearers and determine the suitable answer to the problem. आप लोगों को ऑलरेडी मैंने वो पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है. ओके, सो जस्ट मैं उसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ, सो इट वुड बी इजी. अपने पास में टाइम क्रंच है. आई बिलीव वी आर क्लियर अबाउट द स्टेप्स. पहला पार्ट तो वी विल हैव टू क्रिएट अ रैंडम नंबर टेबल. ठीक है. सेकंड वुड बी फॉर द सर्विस टाइम रैंडम नंबर, कस्टमर इंटर अराइवल, दूसरा सर्विस टाइम, एंड देन विल स्टार्ट विथ वन बेरर. तो मेरा कस्टमर वेटिंग टाइम कितना आ रहा है, then applying for the second bearer. So that is how you actually work around with this. So what I will do is मैं just वो open करता हूँ and I will explain it using that. I have already worked it out. So just वो आपको explain करता हूँ. Please do let me know at any juncture if you are not able to follow. Okay. क्योंकि अभी अपने पास में उतना टाइम नहीं है कि हम एक कर सकें, but the methodology has been actually given to you. Now different scenarios can be simulated according to the same rule. That method is actually called as Monte Carlo method, in which you convert your frequency table or a probability distribution into random numbers, equivalent random numbers, and then you use it for simulation. So it is actually called as Monte Carlo simulation. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, we will be starting with arrival numbers. Okay, so you will have random numbers for the inter arrival time. So according to this, हम इधर पर पहले assume कर रहे हैं कि मेरा पहले ही time t equals to 0 पे ही आ रहा है, तो हम उधर पर कोई inter arrival time नहीं लेते हैं. पहला कस्टमर आया, सर्विस टाइम उसको कितना लगेगा, उसके लिए इक्विवेलेंटली रैंडम नंबर ले रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली सर्विस टाइम वुड बी पुल्ड आउट फ्रॉम द रैंडम नंबर टेबल. ये इधर पर से ले रहे हैं. देन मैं अराइवल टाइम t इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रहा हूँ. मेरा पहला कस्टमर आया, so उसका जैसे ही वो आता है, immediately the service can start, and since it is going to take 3 minutes, so 3 minutes तक चलेगा. At that point of time, if I am assuming with 2 bearers, okay, one bearer 1 attend कर रहा है, वो टाइम पर bearer 2 is idle. So was there any customer waiting time for customer waiting time? Customer आया, immediately he was attended, so there is no customer waiting time. Let us look at the arrival of the second customer. Since the inter arrival time is 1 minute, so उसका arrival time will be, पहला वाला 0 पे आया, इसका arrival time would be 1, क्योंकि जो उसका arrival time था उसके 1 मिनट बाद में inter arrival is 1, तो 0 plus 1 would be 1. ठीक है. So
This is how you will get your next person's inter-arrival time. He has come at t equals to 1. Now first bearer is already busy with the earlier customer. So ये फिर क्या होगा? Second bearer will take over. So he will start attending him at t equals to 1. And इसके लिए भी service time कितना है? Service time is 3. So ये 4 तक इसके साथ में engaged रहेगा. Second customer के लिए भी waiting time is 0. Now comes the third customer. Okay, third customer के लिए inter arrival time is 1. So पहला second वाला customer आपका 1 पे आया plus 1. So his arrival time is 2. At t equals to 2, the third customer has arrived. But now at t equals to 2, even the first bearer is busy and the second bearer is also busy. Now he will get service by bearer 1 when he gets over with the first customer at t equals to 3. So this customer's service time will start at t equals to 3 and will start with bearer 1. Okay, उसको 2 मिनट लगने वाले हैं. Service time is 24 का corresponding was 2. 2 मिनट लगेंगे. So that means his service will get over at t equals to 5. Next customer का arrival time, तो उसके लिए random number is 6. So that means inter arrival time would be 0.5. Okay, so ये इधर पर आपका पूरा range दिया हुआ है. So 0.5 के लिए आपका जो उसका arrival time would be earlier, उसके पहले वाला कस्टमर कितने बजे आया था प्लस इंटर अराइवल टाइम. सो 2.5 हो जाएगा. एंड नाउ एट t इक्वल्स टू 2.5 दिस इज बिजी एज वेल एज ही इज आल्सो बिजी. सो इस बंदे का सर्विस शुरू होगा 4 पे इंस्टेड ऑफ 2.5. सो दैट मींस फ्रॉम 2.5 to 4 this customer is waiting. So that means his waiting time would be 1.5. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is how you will work out and you will see what is the आपके 10 customers आए. 10 customers का आपका सबका waiting time कितना था. So your आप या तो टोटल लेकर के divided by 10 कीजिए या डायरेक्ट सीधा एवरेज फंक्शन अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. So अगर मैं इधर पर इक्वल्स टू एवरेज लेकर के कर रहा होता so मुझे तो भी वैल्यू 1.8 ही आती थी. Fine. So this is how you work out. यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव था कि भाई कस्टमर waiting time should not be more than 2 minutes. Customer should not exceed 2 minutes. So with 2 bearers it's possible. वही अगर हमने सिर्फ एक ही से किया होता था तो then it would have been difficult. Then we would have not been able to achieve customer waiting time of less than 2 minutes. अब देखिए यहाँ पर क्या होता था. ये बंदा आ रहा है, अराइवल टाइम उसका है 2 पे और ये बंदा 3 पे खत्म ना होकर के इसका पहले वाला बंदा भी इधर पर वेटिंग पे रहेगा. सो वो काफी ज्यादा हो जाता है. So waiting time will exceed much more. So in this kind of scenario, what you can do is you can simulate first for one bearer. You will check out your average waiting time. Then you will start with 2 bearers and you will check your customer waiting time, average customer waiting time. And that's how you will take your call. Are we clear? Yes, sir. अभी जो बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं, हाँ, उसमें आप देखिए 4 वेरिएबल्स हैं. एक सेलिंग प्राइस है, सेल्स वॉल्यूम है. ये काफी कुछ मार्केट कंडीशंस को सिमुलेट कर रहा है. आपका कॉस्ट प्राइस भी हर बार चेंज हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशंस है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वो भी आपका चेंज हो रहा है. तो डिमांड सप्लाई के हिसाब से चलेगा. और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आपको योर प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन 50 lakhs कितने बार आ रही है. सो आप यहाँ पर फिर क्या करोगे. सेलिंग प्राइस into sales volume, that would be total revenue which would be generated minus
volume into unit cost will be your cost price आपने निकाल दिया minus your advertising cost. That will give you total profits, what you are left out with. Okay, so अभी इसमें हम टैक्सेस वैक्सेस वगैरह वो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, बट वो भी अगर आप निकालोगे तो आपको और भी कम हो जाएगा. सो आपको टोटल मतलब प्रॉफिट्स आपका कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो आपको समझेगा और आप उसको इस तरह से सिमुलेट कर सकते हो. सेलिंग प्राइस के लिए ले लिया, रैंडम नंबर लिया, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस लिया, रैंडम नंबर लिया, उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट प्राइस, सेल्स वॉल्यूम लिया, रैंडम नंबर लिया, उसका एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लिया, रैंडम नंबर और उसका एक्सपेक्टेड कॉस्ट, एंड प्रॉफिट्स इज नथिंग बट ये देखिए आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका एक तरह से पर यूनिट प्रॉफिट हो गया इनटू वॉल्यूम. सो आपका टोटल प्रॉफिट्स आ गया माइनस योर एडवर्टाइजिंग कॉस्ट. सो आपको एक्चुअल प्रॉफिट्स मिलते जाएंगे. और आई हैव हाइलाइटेड वेयरएवर यू हैव इट मोर देन 50 lakhs. आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी हाईलाइट कर सकते थे. ओके सीधा आप इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लीजिए. मैं इसका हाइलाइट्स निकाल देता हूँ एंड आई विल गो टू आप इसमें कुछ किस तरह से हाईलाइट करना है वो आप चूज कर सकते हो. जस्ट से ओके. सो ऑल दोज वैल्यूज विल गेट हाइलाइटेड. फाइन. सो दिस विल टेल यू कि कितना इंस्टेंसेस है जब आप 50 लाख के ऊपर प्रॉफिट्स जनरेट कर पाओगे. अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस एक चीज तो है, यू आर नॉट रनिंग इनटू लॉसेस, व्हिच इज गुड. फाइन. कुछ इसी तरह से you can do it for question number 7. Now before we close down, okay, I would like you to read a story. Just a minute. It will take depending upon your speed. During World War II, numerous fighter planes were getting hit by anti-aircraft guns. Air Force officers wanted to add some protective armor or shield to the planes. The question was where it should be done. The planes could only support a few more kilos of weight. क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा तो वो उतना फास्ट नहीं चल पाएगा और ज्यादा हाइट पर नहीं जा पाएगा. A group of mathematicians and engineers were called for a short consulting project. Fighter planes returning from missions were analyzed for bullet holes per square foot. They found 1.93 bullet holes per square foot near the tail of the planes, whereas only 1.11 bullet holes per square foot close to the engine. The Air Force officers thought that since the tail portion had the greatest density of bullets, that would be the logical location for putting an anti-bullet shield. Correct? Logically, यही है ना? A mathematician named Abraham Wald said exactly the opposite. More protection is needed where the bullet holes aren't. That is, around the engines. His judgment surprised everyone. He said, we are counting the planes that has returned from a mission. Planes with lots of bullet holes in the engine did not return at all. So, लॉजिकल एनालिसिस सब अपनी जगह पर है, बट वहीं पर साथ में कुछ और आगे सोचने की जरूरत होती है. If you go to the recovery room of the hospital, you will see a lot more people with bullet holes in their legs than people with bullet holes in their chests. That's not because people don't get shot in the chest. It's because the people who get shot in the chest don't recover.
Remember the words of Einstein, not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts. So it's not always that count. तो हमने जितना भी कुछ किया, ठीक है, it will give you some idea, but that doesn't mean that's the final thing. You need to think beyond that. Okay.